कैंसिल कर देते हैं कि आपने जो कैंसिल दिया इसकी हम कैंसिल करते हैं आपके वोट को। तो इस बुनियाद पर द प्रेसिडेंट हैज नो चॉइस बट टू, तो प्रेसिडेंट के पास और कोई चॉइस नहीं थी सिवाय क्या करता वो। अब इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट ये है कि प्रेसिडेंट के पास अब ये है कि वो अपनी को वोट को पेश करे, अपनी बात को पेश करे। तो प्रेसिडेंट अगर पार्लियामेंट कहे कि नहीं सर आपकी तजवीज़ ठीक नहीं है, तो उसकी तजवीज़ को वो ओवरराइड कर सकता है। तो इस बात के ऊपर अब बादशाह क्या रिस्पॉन्स करेगा? वो एतराज़ करेगा, एब्डिकेट करेगा, अपना तख्त ताज छोड़ के चले जाएगा, भाड़ में जाओ जी मैंने तुम्हारा काम करता, या वो कंप्रोमाइज़ कर लेगा उनका, ठीक है यार ये बात उनकी सही है, मुझे इनका मशवरा करना चाहिए और ये अच्छी बात करते हैं, अगर ये मेरी बात को जो कि खल सही नहीं है तो अगर ओवरराइड कर सकते हैं ओके गो फॉर इट। तो वो कंप्रोमाइज़ कर लेगा हमसे, या यील्ड करेगा और उनको सरेंडर कर देगा, या हार मान लेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लग रहा है आपको? तो ये वो क्या करेगा, अक्लमंदी का तकाज़ा है कि उनको कंप्रोमाइज़ करेगा उसके साथ, ठीक है। तो अगरचे ये ऑब्जेक्ट भी आ सकता है यहाँ पे कि वो बट टू, लेकिन लिखा हुआ ना प्रेजेंट हैज नो चॉइस, कोई चॉइस ही कोई नहीं थी। ये वर्ड आपको बता रहा है इसको चॉइस की नहीं थी। अगर चॉइस होती तो वो ऑब्जेक्ट कर सकता था, चॉइस होती तो छोड़ देता, लेकिन चॉइस ही नहीं थी, लिहाजा ही हैज़ टू फॉलो देम। तो उसके लिए क्या होगा, कंप्रोमाइज। तो ही हैज़ टू चॉइस बट टू कंप्रोमाइज विद दैम। जी बच्चों जी ठीक है यहाँ तक। जी हुमायूं सॉरी सुमैया कंदील जी बेटा आप बोलें क्या क्वेश्चन करना है आपने? जी समिया बेटा बोलो। ऐसे बेटा देखें कि अपना ख्याल रखें कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो ऐसे को खाम खा हाथ ना लग जाए। जी बेटा जी शेर रियाज डू सर यू वांट टू आस्क एनीथिंग? साथ ही जो एग्जांपल 2 में आपने जितने वर्ड्स लिखवाए हैं लाफिंग मॉकिंग, सर इनका मतलब एक है? हाँ ये मॉकिंग मजा ये है, लॉफिंग से रिलेटेड है सारे वर्ड, हंसना, हंसना, खेलना और मजाक उड़ाना, और जो है ना वो देखो स्माइल करना, ग्रीन करना, मुस्कुराना, तबस्सुम देना, ये सारे एक ही मीनिंग के वर्ड हैं, ग्रुपिंग के अंदर वर्डिंग है वर्ड, ठीक है नहीं। मैं आपको सिखाऊंगा ये ग्रुपिंग में वर्ड कैसे याद करने हैं, ऐसे याद होंगे आप यूज करेंगे इनको इंशाल्लाह डेली लाइफ के अंदर। लो मेरे बच्चों जी नेक्स्ट हमारे पास टिप्स है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा ये कहती है कि आपको एक डेफिनेशन दी होगी, जैसे ये डेफिनेशन है हिज नॉवेल्स आर डैश, आगे बेटा सेमीकोलन है, इसके बाद डेफिनेशन दी है he uses a long complicated sentence when a direct coupling of simple subject and verb would be best। इसका मतलब ये है कि वो long complicated sentence यूज करता है, हालांकि वो छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर भी बात कर सकता है, लेकिन उसका सेंटेंस लंबा है। तो एक ऐसा राइटर जो नॉवल के अंदर लंबे लंबे सेंटेंस लिखता है उसको किस नॉवेल्स को क्या कहेंगे? क्या वो प्रोलिक्स होगा, क्या वो कॉमन होगा, क्या पॉपुलर होगा, क्या वो प्राइसलेस होगा? ठीक है। तो आपको कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस ये कहती है कि उसका नॉवल जो है वो लेंथी होगा और उसमें बड़ी लंबी लंबी उससे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाए होंगे। तो उसके लिए आपका ऑप्शन क्या कहता है, या आपका दिमाग क्या कहता है? जी वकास, वकास यू कैन Sir, टॉक। just wanted to ask in the past, वो पिछली side पे ना, there was one word that I wanted to ask you about. If you could go to your previous slide. जी मैं should I take this, should I go back to previous slide? Yeah, if you could. I just had one word that I was just a little confused about. What is that? Where it is? In the list of words, Uh, 1 second. starting with yelling or vaping. No, the red words that you had under example 2. Okay, like this one, Yeah, this one. yeah. You said that the words on the right meant the same thing: laughing, scornful, smiling, and grinning. But scornful means to be contemptuous or hate. Ah, yeah, absolutely, you're right. But sometimes, well, you're absolutely right. Scornful means full of hatred, arrogance, and you have detestful and despise and all the thing. But you see that sometimes we laugh on our enemies scornfully. He laughed scornfully and he looked at me scornfully. And sometimes it gives the connotative meaning of smiling when we smile on our enemies and we looked with smile with scorn. So that's why I have mentioned over here. Otherwise,
fundamentally and originally this does not mean. Thank you very much, Vikas, for your concern, and it's a great. Vikas, have you been receiving my messages? Yeah, I've been receiving a message. Okay, okay, that's great. You are in Saudi Arabia, I suppose? No, I'm in Canada. Okay, sorry, I forgot it. Well, inshallah, with the passage of time, we will be a good friend. Like all of my students, I always treat my students with my own kids, and I hope them they will prosper and they will go. Uh, uh, if you have, I hope so. You have subscribed my channel. Have you, Vikas? Have Um, you subscribed my channel? I don't. Yeah, I've seen you send the videos and everything like that. No. I've seen the videos. Okay, so go for it. Go for there. Today, I got an interview. I took an interview from one of my students, and that student is going to make a world record today. And till now, they must have been done that thing. They have established. They have broken the world record previously, and they are going to make a robot. And obviously, they were the wonderful students. I want you to be like that, all of you, and explore your potential and be come on the surface, let the world see you and let the world recognize you, that how great you people are. And that is my motive always being a teacher, and I suppose I hope so you will support me for that. Okay, Yeah, Vikas, do watch it and then let me know for that. Okay, thank you very sure. much, Vikas. Who is the next one? Nobody, Vikas. Okay, then Vikas, lower your hand. Thank you very much for your concern. Okay. Here it is, the next slide, and that is defining characteristics that we are talking about. What was the thing that you people are defined? You people will be given a definition. So what that novel is called, that has lengthy sentences. Can you know that? Do you think that it's a common one? Do you think it's a priceless, or do you think it's a popular? No. Do you don't know the meaning of prolix, but your context say that it must be prolix. Prolix sort of as a novel is novel in which you have a lengthy sentences. Like, have you heard Robinson's Crusoe? Anybody in my class? I sure I know that, or I believe that. I expect that most of you people have heard about Daniel Defoe's Robinson Crusoe. Is there anybody in the class? Don't tell me that you haven't heard the G Saad. Yes, Saad has raised his hand and is down. Kashf Bushra. Kashf Bushra, have you heard about that Daniel Defoe's, um, what is that? Yes, What did sir. I name it? Daniel Defoe's. You have Robinson heard that. Crusoe. Yes, sir. Have you read that Yes, sir. novel? Have you read that? Robinson's Yes, sir. Crusoe. Yes. Have you read that? And let me tell you one thing. Let me tell you one thing. His one sentence comprises of complete paragraph, and there is a one of a sentence. It comprises the whole, passage, a whole page in it, and his one sentence does not complete. So those novels are called prolix. In the same way, there's a John Ruskin. John Ruskin is also in love of expanding his sentence more and more. So these novels and books are called prolix book. Okay, and the next one is the chemist of the medieval ages try to produce a dash that could cure all the diseases. Class, be alert. It's going to test your mind, and it's going to test your vocabulary. It's going to test your sentence structure. I want all of you pick up your mobile phone and let me know that which should be the answer of this question. The thing is that the chemist of the medieval ages try to produce a dash. What they are trying to produce that could cure all the disease, and the hint is there. What is the hint? Hint is there that could cure all the diseases. They are going to discover, they produce what sort of thing that they could cure all the disease. What is the proper word that can define this word that could cure all the disease? Is it the medicine? Is it the herb? Is the panacea, or is the trickly? Please pick up your phone and hurry up. Start sending me a message, and let me see how many people can pick up the answer. G, please, class. Excellent. Menahil has come up with the correct answer. Excellent. 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 Okay, panacea, and then someone says that's medicine. Ibrahim, wonderful, beta. Ibrahim, that's great. And Nur Fatma, wonderful. Alina, wonderful. And. Sana is there. Sana is no, no, please, Sana, beta, rectify your answer.
A, no one. Okay, great. Thank you very much for your response. Your response tells me that you're alive, and there are many of you. Many of you are the new one. Please uh, send me your name as well along. Like Sarah Ashraf is there. Please, Sarah, introduce yourself as well. Okay, class. Thank you very much for your response. I'm really happy that I got a very quick response from all of you. Beta, the real answer is panacea. Panacea is a word. If you write this word in the dictionary, you would find in the definition, panacea is a kind of a drug or a medicine that cure all the diseases. So panacea is a good word. आप यहाँ पे तो medicine भी लिख सकते हैं, तो herb भी आ सकता है, trickly भी, trickly is a kind of a क्या होता है यार, liquid type होता है, ये liquid medicine होती है, इसको trickly कहते हैं, very sweet, बहुत मीठी होती है, ये इतनी मीठी होती है कि इंसान की जो है ना वो दांत जुबान जो है ना वो सारी जुड़ जाती है, इतनी मीठी होती है, इसको शरबत कहते हैं, ये लिक्विड मेडिसिन होती है। तो इस तरह से ये मेडिसिन तो ये सारे हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी हर्ब जो सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, उसको पैनासिया कहते हैं। व्हाट अदर वर्ड्स वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ पैनासिया? It can be a tonic, it can be a potion, it can be elixir, it can be cure-all, and it can be wonder drug. And penicillin was hailed as a wonder drug. It can also be a tincture, and it's also called restorative. ठीक है, ये बेटा जी सारे वर्ड हैं, इनमें से कोई भी एक वर्ड यहाँ पे आएगा तो फिट हो जाएगा। आप लोगों ने टार्जन की कहानियां पढ़ी होंगी, तो उसके अंदर जो है ना वो पोशन का जिक्र होता है कि टार्जन गो समवेयर, मिंकू टिंकू होता है, एंड यू गेट द पोशन एंड यू अप्लाई दैट पोशन ऑन टार्जन्स बॉडी एवरीवेयर दैट इज wounded, and it get heals within minutes, so it's a wonder drug, it's a potion. So penicillin was hailed as the wonder drug, and we are all waiting for panacea. Like in recent pandemic, we all are working for panacea. G. Afnan Khan has raised his hand. G. Afnan, do you want to ask anything? You can talk सर ये now. फर्स्ट लाइन में ट्राई की जगह ट्राइड नहीं आना चाहिए। Oh my God! कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर द केमिस्ट ऑफ द मिडिल एजेस ट्राइड आना चाहिए, ट्रॉय नहीं आना चाहिए। कितने बच्चे कहते हैं? अब बेटा जी ऐसा करें, ये देखो बेटा कितना अहम क्वेश्चन था, और आप देख रहे हो बेटा ये ट्राई मैंने कैसे लिखा हुआ है, ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है। इट मीन्स कि देयर इज अ प्रॉब्लम। तो अगर मैं इसको प्रेजेंट में लिखना चाहूँ तो क्या होगा? द केमिस्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे ट्राइज आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे ट्राइज आना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा भाई। ये जिस बच्चे ने ये जो जिन बच्चों ने हाथ खड़े किए, मैं शायद उन्होंने ऐसी ही बात कही है। तो बेटा यहाँ पे या तो इसको मैं क्या करूंगा, ट्राइज कर दूंगा इसको मैं, या तो इसको मैं ट्राइज करूंगा। क्यों ट्राइज करूंगा? कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? दी केमिस्ट है, तो ये ट्राइज हो जाएगा। और अगर मैं इसको प्रेजेंट नहीं करना चाहता तो इसको मैं ट्राइड पास्ट टेंस में ले सकता हूं। तो द केमिस्ट ऑफ द मिडिल एजेस ट्राइज टू प्रोड्यूस अ पैनासिया दैट कुड क्योर ऑल द डिजीज। ठीक है, और अगर मैं ये भी ट्राइड भी कर सकता हूँ, वो द वन हु मेंशनड इट, थैंक यू very much. If you have got my WhatsApp, you can text me to receive all the praises separately. Okay, नो जी, इज इट क्लियर बेटा जी? चलें आगे हम जी बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास अगली जो स्लाइड आ रही है वो है टिप्स एंड टेक्निक्स रिगार्डिंग व्हाट। ये बेटा इस टेक्निक का नाम है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और बेटा ये बड़ी ही मजेदार टेक्निक है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि वो आपको रेफरेंस दे देगा बेटा जी। रेफरेंस क्या देगा आपको? देखो बेटा, रेफरेंस ये देगा, द डैश ऑफ क्वीन impress the leaders to have ability to read their thoughts। ले बेटा जी मुझे जरा बताइएगा, मेरे साथ साथ रहना आपने। ये है क्वीन की कोई एबिलिटी, ठीक है, और क्वीन की एबिलिटी क्या है कि क्वीन ने क्या किया है? इम्प्रेस्ड कर दिया। किसको इम्प्रेस किया है? द लीडर्स को इम्प्रेस किया बेटा। तो लीडर्स को टू हैव द एबिलिटी टू रीड देयर थॉट्स। अब ये जो देयर थॉट किसकी हैं बेटा? लीडर्स की हैं। तो लीडर्स की थॉट को किसने पढ़ लिया? क्वीन ने पढ़ लिया। क्वीन ने लीडर्स की थॉट को पढ़ लिया, और अभी इससे पहले के लीडर्स को कुछ कहते हैं, क्वीन ने पहले ही उनको थॉट पढ़ ली और कहा कि ओके आई नो व्हाट यू वांट, और तो उसकी इस सलाहियत से लीडर बड़े इंप्रेस्ड हुए। तो व्हाट वी कॉल दैट ट्रेट दैट इंप्रेस्ड द लीडर्स, इज इट सिम्बायोसिस?
Is it insight or it is malevolence or it is consternation? अच्छा बेटा मैं आपको इंशाल्लाह vocabulary के tips भी बताने वाला हूँ आज तो नहीं, एक दो दिनों के अंदर I'm going to tell you all about vocabulary and it's going to be a wonderful thing for you. I want you, before I discuss it, the answer, I want you to send me your answer regarding this thing. Ji beta ji, please hurry up. Start sending your message to me. Ji, please class. Consternation. You know, you come up with the answer consternation. Okay, mixed responses you have got. I am getting mixed responses. Okay, Wakar is there. Wakar Hassan. Wakar Hassan, I'm waiting for your answer. Okay. Naban. Naban, I'm just waiting for your answer. Alia, I'm just waiting for your answer. Hurry up, Puratalan. G, please, class. I have still now get the answer. Consternation, malevolence, insight, symbiosis. All answer are there. You know, there are 4 options and all 4 options have been sent to me as an answer. Obviously one of them is correct, but now listen to me carefully. Just stop your keep your mobile phone down and just listen to me carefully what I'm talking about. Symbiosis is a biological term and it means that some actions happen at the same time. So it does not have to anything with the screen impressed and all that thing. Malevolence, this male, male is a word that always have a negative connotation. So malevolence, whatever is the meaning, it has a negative connotation and negative thing cannot impress the leader, so we can exclude this option very easily. Insights means like see something, observe something, or it's like just understanding something, so it is just like wisdom and you know the ability to look into the future. So insight should be the answer. And consternation, we don't know the meaning of it, concentration, but remember one thing, consternation means restlessness, it's anxiety. And regarding consternation, I would like you to memorize these words whenever you are in anxiety. How many people are in anxiety? All of us become, you know, feel anxiety. All of us become restlessness. All of us become you know, sometimes puzzled, confused, and upset, and we don't know what to do. So consternation, palpitation, and trepidation, and restlessness, anxiety, all the meanings are same. But as far as answer is concerned, it should be insight. Insight, wise, erudite, sagacious, like sort of things. Okay, the next one is another example for that. The modest acceptance, the modest acceptance speech. Acceptance speech कौन सी होती है? It's a kind of a Thanksgiving speech of the Academy Award-winning actress revealed a dash person that understand her in uninhibited screen performance. लेकिन बड़ा challenging sentence है. आप इसको थोड़ी सी बात को देखें, reference में आ रहे हैं. Reference ये है कि कौन speech कर रहा है, क्या मौका है, क्या सेटिंग है, क्या चीज चल रही है. तो हमने कहा कि ये मॉडेस्ट जो है ना वो स्पीच थी किसकी? एकेडमिक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस की. एक्ट्रेस को अवार्ड मिला, उसने एक्सेप्टेंस स्पीच कर रही है और वो स्पीच उसकी बड़ी ही मॉडेस्ट स्पीच थी. ठीक है, बड़ी हम्बल स्पीच थी उसकी. तो उसने हमें रिवील किया एक ऐसे पर्सन को दैट कंट्रास्टेड हर इन अनइनहेबिटेटेड स्क्रीन परफॉर्मेंस, कि वो जो इसकी स्क्रीन परफॉर्मेंस थी वो बड़ी अनइनहेबिटेड थी. यानी इसका मतलब कि नेगेटिव है ना, अन से शुरू होने वाला, तो इसका मतलब है कि ये मॉडर्न से उल्ट वर्ड बनता है. तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो स्पीच, हम ये समझते थे कि ये बहुत बोल्ड है, बड़ी बहादुर है, लेकिन असल में जब स्पीच पता चली तो बड़ी मॉडर्न थी, तो उसकी पर्सनैलिटी से उल्ट निकली. तो बताएं बेटा जी, कॉमिकल होगा, उसकी जो पर्सनोना है वो कॉमिकल होगा, कंट्रोवर्शियल होगा, हिलेरियस होगा, कि रिजर्व्ड होगा? What should be your answer? I want you to send me your answer. In the meanwhile, I can get the answer from Sana Naseem ji. Beta Sana, you can talk to me. I have turned on your mic. Ji Sana beta. Okay, I actually had 2 things to say, but I'll go with the question first. I think it's C for controversial. And also the first question that we did, I think it's grammatically incorrect.
Which one is grammatically correct? The one, the dash of queen impress the leaders? Yeah, it This one? doesn't sound, it's not grammatically correct if you, like, speak it out loud. It's like the insights of queen, like, I think there should be a the there, and it's basically, it feels like, the definition of the word was just like forced into the sentence, but it doesn't really fit in with the sentence. So what should be the sentence of it? Do you want me to, like, make it Correct up on it, my yes. own? Correct it? Yeah, sure. Okay, it should be something like, the insights of the queen impress the leaders with her ability to read their thoughts. Okay, you just change this word to have the ability. This one you have changed it to have the ability, Yeah. or to what's wrong with it to have the ability? The leaders to have the ability to. Now, when you talk about impress the leaders with the ability to Well, read their thoughts. it's not the leaders that have the ability to read their thoughts. It's the queen, because the queen is insightful, so she has the ability to read their thoughts. It's not the leaders. The queen impressed with their abilities. The queen impressed the leaders with their ability to Wait, read their thoughts. well, Yes, yes, yes. it's not there because it's the queen. It should be her. The queen impressed the leaders Mm, with her ability to read their thoughts. Something like that. mm. Yeah, okay. I 100% agree to it. Yes, yes, I'm 100% agree to it. Thank you very much. You have just rightly pointed out that. Well, you see that. You see that, Sana. Here in this, in the previous sentence, I also deliberately make the mistake to find you, to let you know that if you are getting this point or not. I have to teach all these things one by one. But the thing that I want to create in your mind, that whether you are listening to it carefully, whether you're watching that thing, or whether you know the basic structure is or not. So, Sana, thank you very much. It seemed you are where from where you are. You didn't tell me about you, or aren't you? You don't. Can you introduce yourself, Sana, or have you introduced yourself before? Well, Sana is not there, I think. Okay, Aisha Khan is there. G Aisha, what would you like to say? गरमाने Aisha, ले you लो can talk to me now. रोटी साहब है Thank you very much for providing us the garam male. What actually the thing is that we are in a very, very hot atmosphere. We don't want to have any andas anymore. Thank you very much, Asha Khan, for your providing us andas. By the way, what is the price of that andas? Take one andas with you and throw the rest of the andas out. Okay, Saad Ahmed Gill. Saad, what do you want to talk about? Anything? Saad and Fahad. Ji Saad, please. Assalamu alaikum, sir, I was Saad, just wondering, instead of like changing the word sentences, hello? Yes, I'm listening to you. Yeah, I'm Sure. listening to you. Yes, sir, instead of Why changing don't you, the, Saad, changing the words like mean? What do you mean by changing the word? sir, in the first example, the queen, the dash of queen impressed the leaders, right? Instead of changing the word sentence, why don't you just put a comma after leaders to show that you're changing the concept? Yeah, you can say. Well, Saad, send me your point of view in my WhatsApp. Then we will continue it. So it will save our time. Okay, we'll to talk about later. Thank you very much for your Saad, for your concern. Ji Fahad Farooq, do you want to ask anything? Ji Fahad, do you want to ask anything? सर हम Fahad. इसको इस भी करेक्ट कर सकते हैं कि लीडर्स के बाद कोमा डाल दें या फिर इसको बाय हैविंग द एबिलिटी टू रीड देयर थॉट्स। हाँ बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट, शाबाश बेटा। आप बेटा अपने इंट्रोड्यूस कराएं, आप कहाँ से पढ़े हुए हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? सर आई हैव डन माय ए लेवल्स फ्रॉम चांदबाग स्कूल मुरीद की। Oh, that's great. Wonderful, wonderful. I've heard a lot about Chandbagh School, that their standard is very good, and you have proved it. That's good. That's nice.
Thank you very much for your concern, and is exactly like that. Inshallah, we'll talk about in all that in detail. I hope so, class. You are getting a sentence structure, like especially spot the error. I hope so. You are getting that point. Please do respond to me in this way. You are going to learn so many things that I have promised to you already. Jifa, thank you very much. Now we are going to proceed. Let's talk about more and more. Here is the next topic. We are talking about sentence referring to context, and the next, these common sense. Well, common sense. Now it's very it's going to be give you a tough task for you. So common sense is the sense that is not common with everyone. So the behaviorists try to test the rats want to see how do they adjusted to the changing condition. बेटा आपको दो काम करने हैं सेंटेंस के अंदर. You have to find out the sentence structure. Do you find any problems in it? And then you have to find out what should be the word over here. All common sense. Behaviorists कौन थे? उन्होंने क्या चीज जो है वो चूहों पर किया, उन्होंने चेक किया कि वो कैसे एडजस्ट करते हैं अपने चेंजिंग कंडीशंस को. तो डू दे वांट टू नो अबाउट अडेप्टेबिलिटी, or do they want to know about the response, or do they know about to know about the stamina, or do they know about to know their reactions? Before I discuss it, I want to know about your response. Please pick up your WhatsApp and let me know your answers. G, please class, hurry up. Stamina, and then alpha, and then alpha, and then alpha. All of you, Asan come from alpha, Amna, and then there is Samia, and then Ahmed, Mariam, Amna, Asan. Okay. So quickly I'm getting a response. Sayyida Noor is there, Abdul Matal is there, and please write your name. G class, it's really an interesting question. Let me tell you now. But this just for the common sense question. It was nothing special in it, nothing bad in it. Everybody can answer this question if you have just a little thought into it. Okay, let me talk about it. Let me, yes, so long number of students who have raised their hands. Class, I think you don't have my contact number. That's why you're raising your hand. G Farooq, Fahad Farooq, you have still your hand up. Sorry, sir, I forgot to G lower my Aliza. hand. Which thing you have forgotten? सर मैंने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की जो सेकंड जी एग्जांपल थी ना उसका पूछना था, आपने उसका बताया नहीं. बेटा वो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, वो मैं आपको वहां से बता दूंगा. जब जो स्पीड आप करते हैं ताकि हमारा इसमें हरज ना हो, ठीक है. मैं आपको बता दूंगा. जी बेटा जी, ये मैसोन इश्तियाक. व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर नेम फर्स्ट? जी मैसोन. Sir, it's Maysoon Ishtiaq. Can you hear me? Okay, Mason, what is your question? What is your query? Yeah, I can hear you. Please talk to me. No, sir. The Ji, first thing please. is that I've texted you on WhatsApp multiple times, but you haven't responded to me. Okay. I will respond. But Don't you worry. anyways, I'll respond. Everything is coming in. okay, Ji, thank please. you. Okay, then And I'll my talk. answer, Okay, I will. Okay, don't you worry. Sorry? I'll respond. I'll respond to you. I'll respond to you. Don't you worry about it. Just focus over here. I'll respond to you later. Now let me talk Okay. about over there. Okay, let me talk about here. Now, class, listen to me, all of you. Is there anyone who wants to ask a serious question like Alina? Alina, do you want to know anything? Umar, you want to know anything? And Aliza, do you want to know anything? No, you none of you want to. Ji, Aliza. सर वो पहले मैंने लोअर करना भूल गई थी. अच्छा नहीं पड़ा. बट अपने हाथ जो ना देखा करें, वो जो आपने हाथ खड़े किए होते हैं उसको नीचे कर लिया करें, तो फिर मुझे कंफ्यूजन नहीं होती. बट आप अपने माइक बंद कर लें. Sir, Make sure that your mic is. जी sure. जी Umar, please. Sir, the grammatical mistake in the sentence. I don't think there should be the word do in it.
जी जी, प्लीज बताएं. It should be the Okay, why should not be? behaviors, right, sir? Because do and another past tense, they don't suit. Do just doesn't fit in the sentence. ओके, चलें, ठीक है. चलें बेटा, थैंक यू वेरी मच. चलें बेटा जी, अब हम बेटा सुने, अब टाइम नहीं है हमारे पास मेरे बच्चों. आई विश कि मैं आप सबसे बात करूं, सबके आंसर लूं, और उसके लिए तो बेटा मैंने आपको व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म दिया है, उसमें यू कैन आस्क क्वेश्चन एज मेनी एज यू वांट, आई विल इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड टू यू. बेटा सुने, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा अगर आप कैसे इसको एंजॉय करेंगे. द बिहेवियरिस्ट इज प्लूरल and tried is the verb, no problem at all. The behaviorist tried to test the rat's want. बेटा जी, rats की किस चीज को वो टेस्ट कर रहे थे? आगे उसने लिखा हुआ है do the adjusted to the changing condition की बात हो रही है बेटा. चेंजिंग कंडीशन का मतलब ये होता है कि एक चीज दूसरी चीज में चेंज हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? स्टेमिना थोड़ी कहते हैं ना, रिएक्शन कहते हैं. वो क्या होती है? वो अडेप्टेबिलिटी होती है. They just want to know the adaptability of the rat. अच्छा, अब वो रैट की अडेप्टेबिलिटी को चेक करना चाह रहे हैं. बेटा बताएं, ये देखें, ये लश्कर लिखा हुआ है रैट्स. एक रैट है, तो इसके लिए प्रोनाउन दे नहीं आएगा, ठीक है. यहां पर क्या होना चाहिए था? इट आना चाहिए था, यहाँ पे इट. और अगर यहाँ पर इट आ रहा है तो उससे पहले देखें डू आना चाहिए या डज आना चाहिए. लेकिन क्वेश्चन ये है कि बेटा क्या ऐसे होता है? रैट्स अडेप्टेबिलिटी टू सी हाउ डज इट एडजस्ट, होता ही नहीं है, ठीक है ना. ये क्यों नहीं होता? हाउ डज इट एडजस्ट क्यों नहीं होता? इसको बेटा जी मैं आज ही इसकी आपकी वीडियो बनाकर भी मैं व्हाट्सएप पे उसको दे दूंगा, क्या कहते हैं, यूट्यूब के ऊपर अभी इसकी वीडियो भी आ जाएगी, और आपको मैं इसका व्हाट्सएप के ऊपर इसका एक नोट बना के भेजता हूँ कि ये कैसे कैसे मिस्टेक होती है, ठीक है. ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको आप समझेंगे भी, इसमें डिटेल पे आगे बात भी करेंगे आगे क्लॉजेस वाले सीन के अंदर. तो इसका करेक्ट सेंटेंस यूं बनता है, द बिहेवियरिस्ट ट्राई टू टेस्ट द रैट्स adaptability to see how it adjusted or how it adjusts to the changing conditions. ठीक है बेटा जी. बाकी इंशाल्लाह अब जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे व्हाट्सएप पे हम उसको आंसर करेंगे. बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है, ये हमारी टेक्निक है हमारे पास, ये है बी अवेयर ऑफ आई कैचर्स. बेटा जी आई कैचर्स कैसे होते हैं? आई कैचर ये होता है कि हमें लगता है कि जो एल्फ ऑप्शन ना पहली, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, ठीक है. और बाज़ औक़ात हम जब लाइन को सेंटेंस पढ़ते हैं ना, जब हम कुछ सेंटेंस या कोई लाइन पढ़ रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि यार यहाँ पर आने वाला वर्ड ना, ये पहला आंसर ही ठीक है, यही वर्ड होगा ठीक. लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं है. लाइक द फिजिकल लॉज डू नॉट फोर्स बॉडीज टू एक्ट इन अ स्पेसिफिक वे बट मेयरली डिटरमिन हाउ दे बिहेव. तो हम फौरी तौर पर डिटरमिन पे चले जाते हैं. मैं आपसे बेटा जी वो टाइम नहीं ले रहा क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं इसको चाह रहा हूँ कि फिनिश कर दें. आप सब डिटरमिन के ऊपर जाओगे, लेकिन बेटा जी इसका आंसर डिटरमिन नहीं है, क्योंकि फिजिकल लॉज जो हैं, फिजिकल लॉज बेटा डिटरमिन नहीं करते. फिजिकल लॉज क्या करते हैं? सिंपली डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है. अब इनमें क्या फ़र्क है? डिटरमिन में, रिकमेंड में, डिस्क्राइब में, नरेटेड में. बेटा नरेटेड के अंदर कहानी सुनाई जाती है, डिस्क्राइब के अंदर चीज़ों को एज इट इज़ बताया जाता है, रिकमेंड के अंदर सिफारिश की जाती है कि ऐसा कर दें, और डिटरमिन के अंदर डिसीजन लिया जाता है कि भाई बस ऐसा आप करें. तो फिजिकल लॉज हमें फोर्स तो नहीं करता ऐसा करने में ना, वो सिर्फ बता रही होती है कि चीज़ें कैसे, फिनोमेना कैसे चल रहा होता है, ठीक है. इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे डिस्क्राइब आएगा, ठीक है बेटा जी. फिजिकल लॉज डू नॉट फोर्स बॉडीज टू एक्ट इन अ स्पेसिफिक वे बट merely describe how they behave. Okay class, I hope so you got that point. This is called beware of eye catcher. The next one is tools for guessing unfamiliar words. ले बेटा जी, ये वो vocabulary का क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम बहुत सी चीज़ों को सीखने लगे हैं, और these 5 tips are going to improve you a lot of things. So I want your complete attention over the screen, or keep your attention on the screen, on my words, on my things that I'm going to explain it to you. Are you ready class? Be focused, be active and alert and attentive. The very first point is called guess the meanings with the help of affixes. With affixes, we understand the meanings. We can guess the meanings. Then with parts of speech. Then with signaling words like but and or so. Then signaling markers like comma, semicolon, and dash. They will help us to understand the meanings. Guess the meaning with a reference to the context. These are the 5 points
that will enable us to understand the meanings. Okay, before we go to the next slide, before I take you to the next slide and explain you what is it like that, I'll tell you some very important point over here. Look at this, how lengthy slides are still there. Yes, here we are. Class, I'm going to write a sentence over here. Now listen to me carefully. As he is very garrulous, you won't find him silent most of the time during the class. मुझे बताओ बेटे, आप में से कितने बच्चों ने garrulous का मतलब जानते हैं? There will be very few people who know the meaning of garrulous. Okay, if you know the meaning of garrulous, I don't think so you people know the meaning of obstreperous. Obstreperous. Okay, obstreperous. Okay, stentorian. Okay, you can change the word obstreperous. I think the spelling is correct. I don't know why it's giving red marker. Obstreperous. You can change this garrulous, obstreperous, or stentorian. As he is very garrulous, as he is very obstreperous, as he very stentorian, you won't find him silent most of the time during the class. I want to know that, can you give me the meaning of this garrulous? I am giving you this option. Does it mean taciturn? Okay, does it mean quiet, observed, noisy, disciplined? जी बेटा so easy. As he is very garrulous, क्योंकि वो बहुत garrulous है, इसको आप कभी भी क्लास में आराम से खामोशी से नहीं बैठोगे, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि garrulous का क्या मतलब होगा? Obviously noisy. ठीक है बेटा जी, समझ लग रही है? तो आपने बेटा जी garrulous, obstreperous और stentorian का मतलब जिंदगी में पहली दफा सुन रहे हैं. ऐसी बात है ना, ठीक है ना? stentorian, obstreperous, garrulous, vociferous. सुने पहली दफा वर्ड आपने कभी जिंदगी में? Vociferous. Have you ever heard these words before? मुझे जरूर बताना आपने बेटा ये मैसेज करके व्हाट्सएप कि आपको vociferous और stentorian, obstreperous, garrulous का मतलब आता था कि नहीं आता था? ठीक है. और voluble, कभी आपने सुना ये लफ्ज कभी? voluble, vociferous, stentorian, obstreperous, garrulous, talkative, chatty, gabby. ठीक है ना? You haven't heard this word commonly used, but in this sentence, if this words appear, you can find out the meanings very easily that you are going to talk about noisy sort of stuff. समझ मेरे बच्चे बात? तो बेटा जी that is called reference to the context, से हम चीज़ों को understand करते हैं. और this is also called कि हमारे पास कुछ टेक्निक होती है जिससे हम चीज़ों को understand करते हैं. ये टेक्निक क्या होती है? ये लफ्ज़ों को समझने की टेक्निक होती है. वो अब हम टेक्निक सीखने जा रहे हैं. ठीक है, उसमें जो पहली टेक्निक है बच्चों, वो ये है जिसको मैंने कहा कि guess the meanings with the help of affix. तो बेटा जी कैसे हम affix को साथ करते हैं? ये मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको. जी बेटा जी affix का क्या मतलब होता है? ये रिटेंशन टेक्निक है, कंजंक्शन टूल है. बेटा ये लफ्ज फेथ है ना, फेथ, तो फेथ एक रूट वर्ड, इस साथ में लगा ये अनफेथ. अभी कोई वर्ड नहीं बनेगा लेकिन ये अनफेथ बन गया, फेथलेस बन सकता है वर्ड. तो फेथफुल पॉजिटिव हो गया, फेथलेस नेगेटिव हो गया. अन जो है ना ये है नेगेटिव वर्ड, तो अनफेथफुल
उसको ईमान नहीं। इससे ये इनकी स्टडी की कुछ करते हैं और बेटा most of the time we are able to understand the meaning of just these prefixes, क्योंकि ये इन, डी, मेल, एब वगैरह ये नेगेटिव हैं, और अगर ये नेगेटिव वर्ड किसी वर्ड से पहले लगते हैं उस वर्ड को नेगेटिव कर देते हैं। तो demoralizing, denourishing, abnormality, disagreeable or